live? Yes, we are live. Hello, hello. I know there's nobody watching right now, but for anybody who starts to re-watch the stream, okay? Hello, I am somebody trying to achieve something. आपको उसमें जो समझ में आए आप इसको फिल कर सकते हो. So I don't know. Let's see what I'll get. But right now मेरे को बस oh, nice. ठीक है. So we are doing something. Okay. I think I'm streaming on a very low bitrate, and I think I need to increase my bitrate. 25. What is YouTube का recommended bitrate? Okay, it's 68. So I'll set this to 70, maybe even just 68. Like that, shift it, and yeah, nice. So now we are live at YouTube's recommended bitrate. YouTube says that it's a good connection. I think ये ठीक भी है. स्ट्रीम हेल्थ में एक मैसेज था फॉर लो बिटरेट जो कि अब हट जाना चाहिए. Yep, 69, 76, 68, 6900 bitrate है. I have a good stable connection. Okay. फिर से 24. No, I think this will get resolved by itself. इससे किसी को issue नहीं होना चाहिए. Okay. So, what are we doing today? ठीक है. So, what are we doing today? जो मेरा प्लान है, I'm trying to build something in Go. I don't know how good it will be. I don't know how. अच्छा, ठीक है. I don't know how good it will be. I don't know how I'll be doing it. So whatever it is, देखते हैं. Let's plan it out first, and then we'll see कि क्या करना है. How do we plan? Can you see? Yeah, I think you can see, but I think it's a little laggy. थोड़ी सी latency. ठीक है. Stream health is excellent. Um, for anybody in the chat, say hi. पता तो चले कौन है. I'll just drop a hi. Wait. Oh, hi. Okay, so this does work. ठीक है. So let's start planning. Let's head over to YT dev. Yeah, one of these. Okay. Um, First of all, we need a name. I'll just call this Go Micro SaaS. Uh, or before building a SaaS, because I don't think uh, building a SaaS upfront is the best idea. Let's take this one step at a time. Let's make this microservices. Okay. And I'm not going to use any uh, production grade shit. Okay, we just need to understand what microservice is. क्योंकि if I tell you that Netflix uses microservices, ठीक है, uh,
half of the junior devs or anybody starting up नहीं समझ में आएगा what is microservices. You might study the architecture, you might look at how it's implemented, but unless you build something out of it, नहीं तुमको नहीं आएगा समझ में because there are nuances into it. ठीक है, माइक्रो सर्विस है तो there are a lot of things that you need to consider in it. ठीक है, I think I forgot to cd. Yes, and uh, let's just do a go mod init here. GitHub.com, and we'll just call go microservices. Uh, I just add the simple part here. ठीक है, या फिर we'll just branch it into simple. Uh, okay, let's add a main.go. Okay, and let's add a services folder. Maybe a packages folder, which is common to all services. That's what I'm thinking. I'm not sure कि क्या होगा कैसा होगा. ठीक है, तो देखते हैं. Um, let's start with like a package main. For anybody who's new to Go, keep following. Maybe तुमको कुछ समझ में आ जाए, maybe ना आए, I don't know. You might get something, you might not. ठीक है, but at least you'll understand something. 2% ही आएगा, but आएगा. ठीक है, 2% भी चलता है. Let's see. So we'll just write like this works. Also, I'm using log. Normally, you'll see people use FMT. Log का फायदा और FMT का इन दोनों का डिफरेंस देख लो. We'll just log out the same thing but with like a prefix or a suffix. ठीक है, and we'll just see go run main.go. Okay, and log में I get this log format which is like date and time. मुझे एफएमटी में नहीं मिलेगा, तो दिस हेल्प्स मी आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर लॉग कब आया था, एंड दिस विल बी हेल्पफुल स्पेसिफिकली इन माइक्रो सर्विसेज. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ लॉग हो रहा होता है. तो इफ़ यू स्टार्ट प्रिंटिंग, अगर पाइथन में भी देखो, इफ यू जस्ट से कि लाइक प्रिंट प्रिंट समथिंग, ओके, इन पाइथन, एंड there is no context around it. तो अगर मैंने कर दिया print error and something went wrong, or let's say failed to generate message, whatever, ठीक है, ऐसा कुछ, you don't know when this happened. ये बस, also this is a stream buffered output. ठीक है, this is a buffered output. you you won't know when this happened, it just happened. So instead of that, if you're looking at logging, so try to keep uncontextual stuff out of your code base. ठीक है, चीज़ों के पीछे एक रीज़न होगा. ठीक है, एंड हर चीज़ जो हो रही है कोड बेस में उसके पीछे एक you could say there is some context behind everything that gets logged or that gets printed. सिर्फ प्रिंट लगा के या एफएमटी प्रिंट लगा के तुम्हारा कोई खास फायदा नहीं होगा. पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे चलता है, बट इन प्रोडक्शन यू नीड अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड एवरीथिंग. ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. यू हैव लाइब्रेरीज फॉर स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग. ठीक है, जहाँ पे यू कैन डिफाइन एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एज की वैल्यू पेयर्स. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाता है इम्पोर्टेंट अपने आप. you'll start figuring that out once you start doing it. ठीक है, हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, मैं वो मैप आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता. आई थिंक दिस वर्क्स. Simple microservice in Go. Okay, first let's plan out. We are building, let's say, we'll just add pointers. Build microservice. Let's start very basic. Build a gateway that will accept HTTP REST calls. Okay, API calls, which makes sense. Okay, because your gateway is HTTP, then you're building
services that will have specific tasks to manage. ठीक है? Reason is when you're building microservices, your whole point of uh, building a microservice architecture or a project around microservice architecture is simple. ठीक है? You need each service to manage इट्स ओन थिंग। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं, बहुत नुआंसेस होते हैं। आई बिल्ड माइक्रो सर्विसेज जहाँ पे एक ही डेटाबेस में बहुत सारी सर्विसेज कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग एंड इट्स नॉट राइट। ठीक है, इट्स जस्ट व्हाट वर्क्स। ठीक है, जो मैंने बनाया था उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि वी हैड अ सिंगल डेटाबेस, और उस हमें डेटा में प्रॉब्लम नहीं थी, हमें प्रॉब्लम थी स्केलिंग में। हम डेटाबेस स्केल कर सकते थे, वो हमारा चल रहा था, बट वी हैड प्रॉब्लम्स इन द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटाबेस की दिक्कत नहीं थी, तो हमने डेटाबेस स्प्लिट नहीं किया। we built out the microservices, we split our monolithic code base into parts, and we just started breaking things into their own separate concerns। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन की एक अलग सर्विस है से कनेक्टेड सेम डेटाबेस से है, देयर इज सिंगल सोर्स ऑफ डेटा, बट ऑथ का पूरा काम अब एक अलग सर्विस करती है, विच इज बेसिकली कि तुम सीधे ऑथ से बात नहीं कर रहे, बट इफ यू नीड टू डू समथिंग अराउंड ऑथ, देन यू कनेक्ट टू दैट सर्विस, यू आस्क इट टू डू दैट स्टफ फॉर यू, और वो अपने आप मैनेज करेगी। ठीक है, दैट इज द रीजन वेयर योर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विल स्टार्ट शाइनिंग। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अच्छा होता है एज लॉन्ग एज यूर नॉट इनटू द फैक्ट कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि सब लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगेन, गूगल एंड नेटफ्लिक्स आर टू बिग, कुछ से चैंपियंस इन द इंडस्ट्री। ठीक है, गूगल का पूरा कोड बेस मोनोलिथिक है, विच मीन्स कि वो एक ही जगह पे सब कुछ है, एक ही रेपोजिटरी में कह सकते हो, या एक ही स्पेस में। एंड नेटफ्लिक्स में देयर आर माइक्रो सर्विसेज, बहुत सारी है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज की एक सर्विस बनी हुई है। उसका रीजन ये है कि नेटफ्लिक्स अभी बना। नेटफ्लिक्स जब अपना आर्किटेक्चर डिसाइड कर रहा था, जब उन्होंने माइग्रेशन शुरू किया, उस टाइम पे देयर कोड बेस वाज यू कुड से मैनेजेबल, कि वो ब्रेक करके उसे माइक्रो सर्विस में ला सकते थे। गूगल का कोड बेस आज की डेट में बहुत बड़ा है, इवन इफ दे स्टार्ट लाइक ब्रेकिंग इट टू इनटू सर्विसेज, तो उसका कॉस्ट इतना आएगा कि इट वोंट मैटर। एंड इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, इफ यू आर डूइंग गुड, देन डजेंट मैटर, वो ऑलरेडी बहुत हेविली स्केल्ड है। तो इट्स नॉट कि क्या सही है, इट्स क्या चल रहा है। व्हाट वर्क्स फॉर यू इज व्हाट यू फॉलो। ठीक है, नेटफ्लिक्स uses microservices doesn't mean you have to use microservices. So we are building a service that will have specific tasks. I don't know what we'll build. ठीक है, uh, all I know is we'll use some TCP custom, maybe custom, or let's just say we'll use TCP protocol for IPC, okay, uh, or maybe ISC, which is inter service communication. Now, one more thing, there are a lot of things that you need to think about when building microservices। ठीक है, again, I am live here। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, एडिट करूं, तो whatever I'll be doing मैं लाइव ही करूंगा। So when you're building a monolithic code base, your point of security or your fault points are basically, you could say, confined around that single point। ठीक है, कि एक डिप्लॉयमेंट है, उसी को तुम्हें मैनेज करना। लेट्स से कि मेरे पास पूरा एपीआई एक ही डॉकर इमेज में, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज ओनली वन डॉकर इमेज like this, okay, which gets deployed to some instance, maybe like an EC2 or something। ठीक है, Kubernetes चला रहे हो तो उस पे, but then it gets deployed there। ठीक है, वहां पे वो पहुंच गया, वहां वो चल रहा है, so you have one image that does pretty much all of your stuff।
ठीक है, वही डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है एंड वही तुम्हारा ऑथेंटिकेशन से लेकर सब कुछ कर रहा है, जो नॉर्मली कॉलेज प्रोजेक्ट्स में होता है। ठीक है, यू हैव वन फोल्डर जिसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट उसी में बना हुआ है, अगर प्रोडक्ट होगा तो पूरा प्रोडक्ट ही उस पर बना हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स गुड इनफ, वहाँ काम चल गया एंड इट वर्क्स बस। ठीक है, बट when you break this into microservices, होगा ये कि what happens if let's say if this is not one but two services. So this is Y is deployed to another server Y. Okay, and then you have an API gateway like this, which either connects to like one of your maybe like which either connects to one of your these two services, and then यहाँ से you aggregate the data। ठीक है, मैंने डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया। ठीक है, this and then you out push this out to let's say like this। okay, मुझे नहीं पता, I'm just drawing random symbols। तो what happened is तुम्हारे पास API गेटवे था, उसने दो सर्विसेज से डेटा उठाया एंड उसने एग्रीगेट करके डेटा आउटपुट दे दिया। ठीक है, look simple। what happens if this is down? You need to handle some sort of timeout. Also, what happens if this is down and this result has a very critical dependency on this? So you need to know कि ये अगर ये डाउन होता है और मेरा ऑपरेशन इस पे क्रिटिकली डिपेंडेंट है, तो आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट इफ दैट समहाउ आई हैव दिस सर्विस का एक प्रायोरिटी कंसिडरेशन। ठीक है, इस एक तो इसका एक इंस्टेंस नहीं चलना चाहिए। इफ इट इज सच अ क्रिटिकल सर्विस, लेट्स से ऑथेंटिकेशन सर्विस है जो हर बार कोई JWT है जिसे वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इट जस्ट गोज देयर, डिकोड्स, fetches data from the database कि यूजर का क्या स्टेटस है, एंड वट एवर डेटा यू नीड वो उठा के तुम्हें दे देगा। ठीक है, वट इफ योर ऑथेंटिकेशन सर्विस इज डाउन बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट कमिट दैट वेंट ओवर, ठीक है, टू द प्रोडक्शन, और या फिर ये कह लो कि कुछ ब्रेकिंग चेंज हुआ था इन द लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट और वो ऑटो डिप्लॉय हो गया एंड योर डेटाबेस इज नॉट माइग्रेटेड टू द न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, जो SQL डेटाबेसेस में ज़्यादातर होता है दैट यू नीड टू रन अ माइग्रेशन टू basically change your data structures, table schemas। ठीक है, accordingly। अगर ऐसा कुछ होता है तो that particular instance won't work। ठीक है, तो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन बंद हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, you start testing every microservice or everything that goes to production is tested। at least basically इतना तो टेस्ट करोगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड देन द सेकेंड केस और अनदर वेरी क्रिटिकल थिंग इज कि अगर वो चल रहा है और वो इतना क्रिटिकल है तो देयर नीड्स टू बी सम रिडंडेंसी इनटू इट। ठीक है, कि एक सर्विस है, एक दूसरी है जिस पे तुमने लोड बैलेंस करा हुआ है बट एक को प्रायोरिटाइज किया। ठीक है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ मास्टर स्लेव रिलेशन। तुम्हारे पास एक सर्विस है, एक और सर्विस है, और इनकी प्रायोरिटी इज लाइक 80-20। ठीक है, मे बी 75-25। सो आउट ऑफ 100 रिक्वेस्ट 75 रिक्वेस्ट गो टू सर्विस ए जो तुम्हारा मेजरली डेटा हैंडल कर रही है, एंड देयर इज अ रेप्लिका छोटी विच हैंडल्स 25% ऑफ योर रिक्वेस्ट। ठीक है, होगा ये कि इफ यू नीड टू टेस्ट समथिंग, तुम रेप्लिका को अपडेट करके डिप्लॉय कर सकते हो इन प्रोडक्शन। ठीक है, एंड you'll see the difference। you can this is basically an A/B टेस्ट। एक है जो ऑलरेडी चल रही है, एग्जिस्टिंग, वो चल रही है, उसने देखा। ठीक है, और उसने करा ये कि लाइक वो अपना नॉर्मल रिक्वेस्ट हैंडल कर रही है, यू गेट द डेटा इन, यू गेट सम रिजल्ट्स आउट। ठीक है, एंड देन यू वांट टू चेंज समथिंग, उन्होंने कोई नया पैरामीटर ऐड किया है और मे बी अ न्यू फ्लैग टू आइडेंटिफाई फ्यू सेट ऑफ यूजर्स। लेट्स से you're trying to figure out कि मेरे पास कुछ बीटा यूजर्स हैं, उन बीटा यूजर्स के लिए I'm building out a new type of auth system। ठीक है, और मे बी I'm upgrading my auth system to handle बीटा यूजर्स डिफरेंटली। ठीक है, कुछ अलग पैरामीटर्स आ रहे, सो यू वांट टू टेस्ट दिस आउट दैट हाउ वेल इट वर्क्स। तो
तुमने एक और डिप्लॉयमेंट करा, ठीक है, बेसिकली एक नया रेप्लिका इंस्टेंस बनाया, उसको लोड बैलेंस कर दिया विद अ लोअर प्रायोरिटी और मे बी विद अ लोअर वेट, अगर वो वेटेड राउंड रॉबिन पे चल रहा होगा तो। इफ इट्स ऑन राउंड रॉबिन डजेंट मैटर, वो सबके लिए बराबर ही होगा। अगर ए बी टेस्ट करना है, आई वुड सजेस्ट कि वट एवर यूर डूइंग, एट सम काइंड ऑफ वेट, ठीक है, basically some sort of bias or some percentage weight to it कि भाई I want only 10% of the requests जो मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है उसका to go through this, and बाकी सारी जो existing है उस पे जाएंगे। So 90% of your traffic won't even see any change क्योंकि कुछ नहीं हुआ, बट जो 10% लोग जिनकी रिक्वेस्ट नए वाले पे गई उसको तुम मॉनिटर कर सकते हो प्रोडक्शन पे, एंड you'll be able to figure out कि तुम्हारा नया वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट है, मे बी कोड बेस चेंज है, जो भी है, ठीक है, जो लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट है वो कैसा चल रहा है। इफ इट इज डूइंग गुड, ठीक है, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द लोड। तुमने 10% पे लाइक एक वीक रन कर लिया, यू नो कि एक वीक में आई कैन आइडेंटिफाई, मे बी तुम्हारे पास इतना ट्रैफिक है कि तुमने 2 दिन में आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, 10% पे अच्छा चल रहा है, you push it to 20, then maybe you go to 35, 33, then you head over to 50, ठीक है, once you're able to take 50% of the load without any breakage, ठीक है, then you can start pushing it up, ठीक है, 50, 75, maybe 90, and now what happened is तुमने gradually अपना नया कोड बेस ले आया, ठीक है। अगर ये लोड नहीं ले पाता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि दैट इट्स नॉट एबल टू टेक द लोड, ठीक है, लेट्स से 50% पे इट्स शोइंग सिम्टम्स ऑफ मे बी अनस्केलेबिलिटी, ठीक है, एंड वहाँ पे यू हैव दैट, यू कैन आइडेंटिफाई दैट एट दैट स्टेज, ठीक है, ताकि तुम इंस्टेंटली उसे रोल बैक कर दो कि ठीक है, विल बी पुशिंग इट बैक टू 20%, ठीक है, और इस पे काम आगे होगा। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ट्रैफिक कि 50% पे कितना ट्रैफिक था, ठीक है, मे बी यू इंट्रोड्यूस सर्टेन सिक्योरिटी फीचर जिसने परफॉर्मेंस इम्पैक्ट मारा था और वो हो गई प्रॉब्लम। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, दैट हाउ यूर डूइंग। हम बनाएंगे एक टीसीपी प्रोटोकॉल फॉर इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, एंड दैट्स इट, आई थिंक दिस इज अ सिंपल माइक्रो सर्विस। ये 3 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। विल डू द स्टेप 1 ऑन दिस स्ट्रीम, विल बिल्ड द सर्विसेज ऑन नेक्स्ट स्ट्रीम, मे बी ये 2 काम हम कर लें। प्रोटोकॉल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग इज टू मेक अ कस्टम प्रोटोकॉल अराउंड दिस, maybe a custom TCP, maybe a custom HTTP implementation. Okay, with like path, uh, type, or what you call method in HTTP, and some payload. Okay, because ये चीज जो है it doesn't have to be very complicated for us, ठीक है, तुम नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, that is also possible, it's very simple. What I want to show you is how complex microservices can be made simple, ठीक है, and how simple microservices can get complicated just because we are adding simple things, ठीक है। देखो टीसीपी कनेक्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, एक टीसीपी कनेक्शन किया तुमने, देयर इज अ सॉकेट लिसनिंग टू योर इवेंट्स, एंड व्हाट विल बी बिल्डिंग इज लाइक अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है, तुमने रिक्वेस्ट भेजा एंड नाउ यू आर वेटिंग, सो वंस द अदर एंड ऑफ योर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल receives your request and it knows कि यहाँ पे रिक्वेस्ट खत्म होती है, it will start responding, and from that point you start receiving. So it's a straightforward communication कि you send your whole request and then you start receiving. इसमें you could add streaming maybe, ठीक है, कि you just pass in some sort of parameter configuration or something, and वो चल जाएगा उस पर। सेम थिंग अगर तुम्हें और स्केल करनी है, ठीक है, दैट यू नीड हाई स्केलेबिलिटी, तुम इसको कोई मैसेज क्यों डाल दो, मे बी जीआरपी से ट्राई कर लो, ठीक है, because all this means is how two services communicate with each other, how your gateway communicates with your services, how your gateway identifies which service is available. Right now we'll be making this very simple, ठीक है, one instance of each in the services. Let's start with gateway. I don't know how I'll be building this, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, देखते हैं। Let's start with a very basic HTTP server, new gateway. Maybe have a gateway
struct with some parameters like port, which is string. I don't need JSON for this. It's a config में defined होगा. So I'll be needing port as string, and we'll need net http dot new servmux. I think this should do most of our things. ठीक है. What the gateway that I'll be building will be very simple. ठीक है. बहुत सिंपल सा सर्विस बनाते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे ऐड हो. अगर एक बार में कॉम्प्लिकेटेड सर्विस पिक कर लेंगे तो वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि उसको सिंप्लीफाई करके समझना डिफिकल्ट होगा. So we'll go with like a very simple service. Let's also define what we're building. Uh, Services. I'll just do plan and services. So services, what I'm thinking is maybe an auth. Okay, a simple auth. Maybe a math service and a physics service. Okay, let's do these two. Physics maybe I think we'll just do some simple things like maybe force वगैरह calculate कर लेंगे or something like that. ठीक है, I just need to show कि how it works. Also physics service is sort of dependent on math service. तो ये intercommunication भी दिख जाएगा. That gateway connects to auth, gets your authentication, and then goes ahead. And math and physics, अगर तुम्हें सीधे math करनी है, you can use math. If you're doing physics, I think physics itself will be using math. तो ये तीन सर्विसेज में हम मोस्ट चीज़ें कर पाएंगे. ठीक है. आई थिंक दैट मेक्स सेंस. आई डोंट नो, कोई आएगा तो बता देना. लेट्स हैंडल like a post on auth login, and I'll need handlers, right? So gateway में handlers. Okay, so for now what I'll do is I'll just make a dummy handler. No op, no op handler. I think that makes sense. I need the HTTP response writer and the request. Does not return anything. I think also अब क्योंकि कर रहे हैं तो let's add utils. Import. Okay. Fun write error, which will take our response writer and the error that we will get. Okay, and this will return write JSON on this with like a map of string, and the value will be error is error dot error. Yes. Maybe a status code which will be int. I'll need the status code by default. Status code is status code. Let's make this any. ठीक है. Any अगर नहीं पता तो any is like a type alias for interface this structure. ठीक है. Any means this, तो अगर सीधे ये लिख दोगे तो भी चल जाएगा. It's the same thing. It's just a type alias. Func I want write JSON, which will have a response writer and some body, which will be like a map of string to any. I don't care. कुछ भी दे दो. And then I need to write w.write head with status code and w.write. Okay, so we need bytes, right? So I'll need the buffer. So bfr error is json dot new encoder. Encoder, yes, w.
dot encode. I want this body to be encoded. So I don't need this, just need an if, or maybe not even that if. Use underscore equal to. There we go. Oh yes, यहाँ पे I need a status code should be in. Oh, it does nothing, right? भूल गया था. Oh, okay, typo. So हमने एक नया encoder बनाया. Okay, this is like sending. This is basically how you send JSON back uh, by using normal, कुछ से इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ठीक है, इसमें से हमने कुछ भी अभी वो नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है. सो वी आर बेसिकली यूजिंग वट एवर वी ऑलरेडी हैव. आई डोंट थिंक वील बी यूजिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ठीक है, जो ऑलरेडी गो के साथ आता है वो. इसको हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं नो ऑप में टू राइट मे बी ऐसे utils yes dot write json on this writer. Give me a map of string any message no op no operation. That's it. I don't think our status code is को 200 ही रख दो. I think that makes sense. And यहाँ पे now you could say no op handle. I think that's okay. It's handle func. Yep, it's handle func. So handle func will handle वहाँ पे मैं I can give this handler. ठीक है. Also just to be sure कि response आया कहाँ से है. Let's get the path request path from r dot url dot path. हाँ चलेगा. So I'll just say path is request path. And this is by itself a string, right? यहाँ पे. Yes. So that is a string. Go more. Okay. Not implemented yet. ठीक है. Because new gateway हमने ले तो लिया, but ये कुछ return नहीं करता. So it returns an instance to gateway, and it also has an instance to the mux, which will be http.serve mux. And यहाँ पे होगा like G is gateway. ठीक है, struct बनाते हैं पहले. Port is defined as is. ठीक है, and mux is this thing. तो ये यहाँ ले लेते हैं. Mux is the mux that we use. ये by reference है because there is a star, so this is basically a pointer. So in बनाने के बाद even if I give it here, it's a pointer का reference copy. तो अगर यहाँ देने के बाद भी मैं अगर इसमें changes करूँगा, तो this will reflect those changes. ठीक है, then return this gateway, and now I can start running this gateway. ठीक है, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं. fmt नहीं चाहिए मेरे को, तो we just need gateway dot new gateway. Okay, and I'll run this on 5K. And we'll just add a log to start it. So gateway running on port. Okay, and now that I need to pass in something, I'll just use a f. Okay, to print a formatted string. Port %s and add a colon. ठीक है, or maybe not a colon ताकि वो clear रहे. And the port is port, and let's define the port here. Const gateway port, which is string, and that will be 5K.
gateway port, or maybe not even port. I think पूरा एड्रेस डिफाइन करना ज़्यादा बेटर होगा. So gateway also contains instead of port just the whole address, and we also accept the address, and we'll set the address as ADDR जो हमें मिला. यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, just needs to be set ताकि हम इसको listen करते टाइम पे कर पाए. Okay, also I don't know कि हमने क्यों सेव किया है, because अभी मेरे दिमाग में भी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्यों चल रहा है. But let's see. We have http.listen and serve g.mux. है तो. Oh, sorry. M needs to be capital for it to be exported. Yes. कोई नहीं. काफी टाइम हो गया गो करे हुए. Okay, and this is what it does. So we are making it on that, and then it looking for gateway address. Okay, so order थोड़ा सा उल्टा हो गया. And this gives an error. Okay, and this will only give an error when it will stop. So यहाँ पे I have that option of uh, logging fatal. Okay, this will basically only have any problem if the error is not nil. इसको भी check कर सकते हैं. अगर कोई error आया तो we'll log it out. And log fatal, like it says, it's like calling print but with an OS exit. तो अगर मैं इसके बाद कुछ और लिख दूँ और कोई error आया तो this will run, and then nothing will run. It will exit from there. Hmm. think Now this should be ready, but मेरे को बार बार command भी नहीं लिखना है, तो we'll just add a make file. ठीक है. phony run build clean. uh, सबसे पहले we have the run command that depends on build, and this is dot slash, like, I don't know, like app name, maybe run all. gateway run कर लेते हैं. So I'll just keep adding commands यहाँ पे. The gateway command is to be go build dash o dot slash bin slash gateway, and here. But are we building everything? I don't think we are building everything. ठीक है. यहाँ पे the thing is, जो अभी मैंने structure लिखा है, this is a single app with multiple services running on different uh, ports. ठीक है, जो मेरे दिमाग में है, जो I'm thinking right now. But what I want is to build a binary for each of them, ठीक है, and run them individually. और वो करने के लिए मुझे हर सर्विस को अपने खुद के सेल्फ कंटेन्ड पैकेज में बनाना पड़ेगा. ठीक है. So this basically means कि we have to restructure the whole thing, move this utils out and into services gateway. ठीक है, and remove this package. So now what I have is gateway, और यहाँ पे utils नहीं होगा, right? pkg नहीं है. What I have is util gateway. अपने आप ही पता चल जाएगा. Yes. Services gateway utils. Yep. So we have gateway. Okay. And ये जो main file है, this also uh, goes inside gateway. And now what I have is
Yeah, I think it makes sense. इसको भी गेटवे में डाल सकते हैं. So I don't need that. And I also don't need this. क्योंकि वो दोनों एक ही पैकेज में है तो they can use their services as and when required. ठीक है. But now we need to build the binary for just for the gateway. ठीक है. वो ट्राई करते हैं. Go build dash o gateway dot slash services gateway main dot. I don't know. पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा. वैसे तो लग नहीं रहा कर रहा है. ठीक है. It just says undefined क्योंकि उसे मिला नहीं. गेटवे गेटवे आ गया. So उसे मिला नहीं. uh, can I make this a workspace? Go work in it. And यहाँ पे I could just do go work add services gateway. Is it new? Go go work use होता है. Okay. Go work use dot slash services gateway. Go work sync. I don't know. पता नहीं. आया नहीं आया. नहीं आया. Use dot slash services gateway. वर्ड की है तो. ठीक है. ये और चेक कर लेते हैं. go work go workspace. Let's just start using that. क्योंकि what you're building is actually a multi-module workspace. Workspace. I don't know. Okay. Go work in it. Dot slash hello. Use dot slash hello. Okay. Okay. So go work use dot slash services gateway. I think that is what I need to use. Okay, it says something is wrong. What ये क्या हुआ? Okay, load file. Nice. ठीक है. So go work init dot slash services gateway. Let's see. Let's drop this file and then try this. I don't know कितना काम करेगा. नहीं कर रहा. This thing is not working, guys. This is not working.
Okay, what are the requirements? So can I do this? Can I make this name? Make this name. ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो. Maybe now I could use. नहीं हो रहा. Use dot slash services gateway. क्या हुआ? It says gateway does not contain a module, but oh, okay, okay, got it, got it, got it. I got the reason. ये हटाओ, ठीक है? And let's cd into services gateway and go mod in it. Go. I just forgot what we named it. Go microservices gateway. Let's call this a hyphen instead of a package. We'll just name it that way. And now there is no problem. Yes, now it will work like this. Okay, main.go. And now I think what we could do is go work use services gateway, go work sync. Okay, and go workspace is also defined. So can I do go build gateway? So go build dash o gateway. Yes, and then if we run gateway, I don't know if it will run or not. Okay, and just to verify, let's drop a curl and it wants post on localhost 5K auth login, and it drops no, which means कि now this is running. Okay, and now our setup is done. ठीक है, मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, but we did it. So let's initialize remote add origin. Okay, I think that makes sense. Let's commit this initial repo setup with simple gateway. But before we commit this, I need a git ignore, which will ignore the bin directory. And I'll need a bin directory. Okay, and I'll want to move this to the bin directory. This is to make sure कि जो मैं builds निकालूंगा वो yes in services gateway. This will make sure like you see ठीक है देख लो चीजें ऐड हो गई हैं most of the stuff is added but जो bin directory थी उसे हमने ignore कर दिया because इसमें binaries होंगी ठीक है and when you're cloning repo from let's say
मेरा प्रोफाइल, देन यू डोंट नीड द बाइनरीज, यू नीड टू बिल्ड इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, बिकॉज मैं अपने सिस्टम पे बिल्ड कर रहा हूँ एंड बाइनरीज आर यूजुअली नेटिव। ठीक है, गो बाइनरीज। तो इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। तो अपने आप बिल्ड करो, अपने आप रन करो, you'll feel happy, I believe so। अब एक बार अपना make कमांड भी रन कर लेते हैं। Okay, it does build and then I want to run it। bin gateway, it works, it does work। ठीक है। Fix fix make file gateway build command। Okay, there is no push because the remote repository still does not exist। I'll create one right now and we'll see। कोई पब्लिक नहीं है ना? Okay, go microservices, that works। I want this to be public and I will update the description as we go। I don't know, we already have a review। Um, does it work now? Go microservices, oh shit, sorry, I forgot, git remote set URL, no, go microservices dot git, and I again forgot to set origin। Nice। So if you want to start from here, we'll just branch out। Let's check out and we'll start building the gateway। Okay, from here। ये branches में merge करता रहूँगा, but I think that's all the time I have today। We did set up a few things, we did talk about some stuff। ठीक है, हमने बात करी about microservices, हमने बात करी about when to use them, is it right or not। ठीक है, again it's contextual। हमने बात करी क्या बेटर है। ठीक है, और एक माइक्रो सर्विसेज में क्या क्या नुआंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। सो होप यू विल एंजॉय। ठीक है, आज तो मेरे पास टाइम कम था, बट आई थिंक विल स्टार्ट एंजॉयिंग द स्ट्रीम्स एज वी गो ऑन। ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हेन आई विल बी स्ट्रीमिंग नेक्स्ट, बट मे बी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो आई विल बी स्ट्रीमिंग वेरी सून। वी हैव दिस डन। ठीक है, we have a lot of stuff done, so let's see, when this uh, how this goes, where it goes, I don't know, देखते हैं। uh, I'll drop the GitHub repo का link here, just so you guys, if anybody wants to try out, you can try out here। If you want to try out, you can try this out, and uh, we'll meet on the next stream। ठीक है, and also if you're watching this as a replay, okay, if you're watching this in the future, it's 19th October today। I believe it is 19th October today। Yeah, it's 19th October today, and I'm not sure when I'll be streaming next। Most probably I'll be streaming when, like another weekend or so, maybe I'm not sure, next weekend, maybe next Friday, but I'll schedule the stream। You can subscribe to the channel, and like I'm not saying that because I want, definitely I want, but that's because whenever I'll schedule another stream, you'll get a notification, and you'll get a reminder like every day or so,
ठीक है, तो कर लो। तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। ठीक है, तुम्हारा ज्यादा है, मेरा तो पता नहीं कितना है। एंड विल मीट सून। ओके, बाय, चीयर्स।